Hello everyone, welcome you all. Let's start another session of the chapter Reaching the Age of Adolescence. In this session, we will discuss about sexual development. As I told you that in human being, there is a particular age in which some development takes place, and after that, the person become able to do the process of sexual reproduction. So here we will discuss about sexual development. Development of sex organs. During puberty, physical and sexual developments takes place more or less at the same time. So during puberty, these changes takes place. The sex organs of boys and girls start developing. In boys and in girls, sex organs start developing. Testes in boys mature, as testis is the reproductive organ, or you can say sex organ in boys. So they become mature, they start producing semen. We had discussed the semen in earlier chapter. Semen which contain male gamete and some fluid. So they start to produce semen. In girls, the reproductive organs are strengthened, the ovaries enlarge, and the production of ova begins. The ovaries release mature ova. The girls start their monthly menstruation cycle. So finally, I can say that during the development of sex organ, male sex organs start to produce male gamete and female sex organs start to produce female gamete. Development of secondary sexual character. What is the meaning to say secondary sexual character? It means that some are the characters which play a primary role in the process of sexual reproduction, and some play some help in that process. So secondary sexual characters. The development of secondary sexual characters also takes place. It starts in boys with the appearance of pubic and facial hair. Pubic hair, the hair which start to grow on the reproductive part. And in boys, facial hairs also start to grow. In girls, the breasts start developing and the appearance of pubic hair takes place. Body hair also become prominent. So these are the secondary sexual character that takes place in the body of male and female. Then change in hormonal balance. Most of the changes that occur in adolescents are controlled by hormones. Hormones control changes. What are hormones? These are chemical substances produced and secreted by the endocrine glands. Endocrine gland, basically these are a special kind of cells which secrete something, and which they secrete. Some glands secrete hormones. So these are the chemicals secreted by endocrine glands. Endocrine glands means special cells which have an ability to secrete something. Hormonal balance in adolescents shifts strongly towards an adult state. Means hormones play an important role. They help to change a person into adult. So they help to shift the stage childhood state into adult state. This is triggered by the pituitary gland. Means hormones are triggered by pituitary gland. Pituitary secretes hormones. These influences the production of testosterone from testes in boys and estrogen and progesterone from ovaries in girls. First, pituitary secretes its hormone, then it sends the signal in the form of hormones. It sends the signal to testes to secrete testosterone and to ovaries to secrete estrogen and progesterone. So हम बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन
टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको ट्रिगर कौन करता है, इनको ट्रिगर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। These hormones are released into the bloodstream and start the rapid maturation of the gonads. Gonads means sex organs, means testes and ovaries. The reproductive phase in human being. Humans become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Obviously, after the production of gamete, this reproduction process will take place. The sperms and the ova. The male produce gamete over a longer duration in their life as compared to females. Yes, female produce their gamete, that is ova, for a certain period of time. We will discuss it. And sperms are produced for a long time. In females, the ovaries become active during the age of puberty, as we had already discussed. When the girl reaches puberty, this is normally between 11 to 13 years of age. So during this age, it is not a fixed age, but during approx this age, females start to produce their gamete because their ovaries become active. One ovum in one of the ovaries become mature once in about 28 days. In previous chapter we had already discussed about it that in female there are two ovaries, left and right. So they are saying that one ovum in one of the ovary, if left is producing ovary, so at that time right is not producing. Second time right will produce the gamete but left will not. So one time one ovum will released from one of the ovary. The mature ovum enters the oviduct. I think you know about it. You should keep that diagram in front of you from the reproduction chapter, female reproductive system. Then you can easily understand we are talking about which one part. So the mature ovum enters the oviduct where it may get fertilized. Why they had written may get? Why they have written may get? Because fertilized may be or may not be. If fertilized, fertilization means mating, fusion of male and female gamete. But अगर वहाँ female gamete तो है पर male gamete नहीं है तो fertilization नहीं होगा. और अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो दोनों कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे. If fertilized, it develops and reaches the uterus, a pear-shaped structure present between the ovaries. अगर fertilization हो जाता है तो fertilized होने के बाद एग, मतलब कि एग के साथ स्पर्म के मिलने के बाद वो यूट्रस में पहुंचेगा. यूट्रस क्या है? एक pear shaped structure है ओवरीज के बीच में. Uterus is muscular and elastic and can grow, stretch and expand many times its size when the fetus grows and develops inside it. यूट्रस इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है कि अपने साइज से कई गुना वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है. तभी तो एक फीटस उसके अंदर इजीली ग्रो कर सकता है, डेवलप हो सकता है. इवन इन सम केसेस मोर देन वन फीटस कैन ग्रो. आपने सुना ही होगा कि किसी को ट्विंस हुए हैं. बिफोर द एम्ब्रियो एंटर्स द यूट्रस. अब आपको ये टर्म पता है एम्ब्रियो क्या है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं. तो एम्ब्रियो, व्हेन एम्ब्रियो एंटर द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव इट बाय फॉर्मिंग अ थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. यूट्रस अपने आप को थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल से प्रिपेयर करता है, मतलब कि अपनी वॉल को थोड़ा थिक कर लेता है, स्पॉन्जी कर लेता है उसमें ब्लड फिल करके, जिससे कि वो आने वाले एम्ब्रियो को इजीली नरिश कर सके. ये तो तब की बात है जब फर्टिलाइजेशन हुआ. मानिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लेकिन यूट्रस को थोड़ा ही पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो तो अपनी तैयारी पूरी करेगा. तो फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, बट यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक बनाता है by the blood vessel, by filling blood. If fertilization does not occur,
द एग डिसइंटीग्रेट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सिर्फ ओवरी से निकल के एग आएगा, और एग को क्योंकि स्पर्म तो नहीं मिला तो एग टूट जाएगा, एग क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जब एग टूट जाता है देन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज शेड ऑफ, कौन सी ब्लड वेसल, जो यूट्रस ने प्रिपेयर किए थे, अपने आप को स्पॉन्जी बनाया था, वो भी शेड ऑफ हो जाती है, वो भी टूट जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये हर गर्ल में होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबरिटी। बेसिकली यही इंडिकेशन है दैट अ गर्ल इज रेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ये कितने दिन चलता है, इट लास्ट 3 to 6 days। द फर्स्ट menstrual flow that begins in a girl at puberty is termed as menarche। गर्ल की लाइफ में जब सबसे पहला ब्लड फ्लो ये होता है उसको बोलते हैं मिनार्च। द menstrual cycle stops when the woman reaches 45 to 50 year of age। मैंने आपसे बोला था ना, अभी लिखा हुआ था कि फीमेल के अंदर ये फीमेल गैमीट एक पर्टिकुलर एज तक ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो 45 to 50 की एज तक प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, और जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाए दिस इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्च, एंड जब वो खत्म हो जाता है, जब वो स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इट इज मेनोपॉज। इन जनरल मेंस्ट्रुएशन अकर रेगुलरली at interval of 28 to 30 days। So every month गर्ल की बॉडी से ये ब्लड फ्लो होता है, इसको बोलते हैं menstrual flow। However this period can be variable, obviously ये पीरियड वेरिएबल हो सकता है। ये एक नॉर्मल टाइमिंग बताई है 28 to 30 days, means one time in a month, but it may vary। It may take about 6 months to 1 year for a girl's menstrual period to become regular। Normally this should not cause any worry। जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वन टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के बाद फिर कुछ मंथ तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता ही नहीं है या ज्यादा हो जाता है, तो इससे गर्ल को घबराने की जरूरत नहीं है। करीबन 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लग जाता है इस मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टेबलाइज होने में, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। इफ ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ओवम के साथ स्पर्म मिल जाता है देन अ zygote is formed। It begins to divide and gets embedded in uterus for further development। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि zygote बनेगा, zygote के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा, लिखा भी हुआ है इन्होंने। You have learned about this in the previous chapter, so I think you understand it। In the next one session we will discuss about the determination of sex। Have a nice day, goodbye।